5 स्टार। वो टाइम तो हो सेट कर गया। लूँ। टाइम सेट हो गया है। हैं दो दो डेविल किंग कैसे हैं? अभी व्हाट द हेल? तो चुप रह 2 मिनट। अबे दो दो डेविल किंग कैसे हैं? चुप नहीं रहेगा। नहीं, जब तक तो ये नहीं बताएगा तूने कैसे किया। जादू से। काया और दूसरी है तेरी। कम ऑन गिव मी अ गुड। काया और चीची है ना? अरे चुप रहे, मेरे को देखने दे क्या आया, आएगा नहीं आएगा कुछ। फक। कुछ नहीं आया मेरे पे। एक ही बचती। 14 है। हाँ। चल निकल जा, चल अपने वर्ल्ड में भाग यहाँ से। भाग साले। कुछ नहीं मिला। अबे तो स्ट्रीम पे जाके देख, तेरे दोनों कैरेक्टर सामने खड़े थे और दोनों पे डेविल किंग आ रहा था लिखा। वो मेरा स्ट्रैटेजी है, वो स्ट्रैटेजी। ऐसे कैसे चलेगा यार। हैं? अरे हो जाएगा, मिल जाएगा, अभी बहुत टाइम है। तो कैसे? बस 14 दिन है, साढ़े बटन कहाँ है। मेरी हाँ एक तो चीज अच्छी है, 14 दिन मेरे को में हो कैरेक्टर जाएगा। बैनर पे ज्यादातर कैरेक्टर वाले मिल जाते हैं ना। हाँ। वैसे मिले ही कितने, एक एल्बिडो मिला था फर्स्ट टाइम में, दूसरी बारी में चीची मिली थी, और तीसरी बारी में यही मिला है अभी बस 20। मिले ही हाँ तो कितने। तीन तो मेरे मेरे को कितने मिले होंगे? शाओ। 3 कहाँ, 2 बेवकूफ। तो तीन तो बोले एल्बिडो। अब चीची तो वैसे मिली है, चीची कैरेक्टर बैनर वाली थोड़ी थी। अच्छा हाँ, तो दो मिले ना तेरे को। तो, और मेरे को शाओ और वेंटी, मेरे को भी तो दो ही मिला है। वही तो कह रहा हूँ। तेरा लग ज्यादा अच्छा चलता है मेरे वर्ल्ड में, तेरे को पटक दूंगा मैं, देख लियो, भाग जाए यहाँ से तो तू। तेरे को डायरेक्ट सारा लग चुका। वही मिल जाता है। जरूरी नहीं है। अच्छा मेरे को ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि चाइल्ड मिले ना मिले, मतलब चाइल्ड अच्छा लगता है मुझे, उसका प्ले स्टाइल जो स्विच करता है ऐसे करके। नहीं मिलेगा तो भी चल जाएगा, तब तक मैं क्या करूँ फिर। स्टोरी खेलने में कितना टाइम लगेगा मुझे? ओशियन राइड मारो। ये तो बहुत टाइम लगेगा, तो आधा घंटा लग जाएगा लगभग, आधे से भी ज्यादा है। तो एक काम करता हूँ ना, पहले ओशियन राइड तो डिज़ाइन ख़त्म। हॉन्ट ही कर लेता हूँ सबको। एक दो थोड़ा सा डिज़ाइन करा दे तो पहले, उसके बाद स्टोरी कर लूँगा। तेरे 160 थोड़ी हुए हैं अभी। हैं? कितने तेरे पे डिजाइन अभी? 138। हाँ तो बस करते रहे, अभी नहीं मरेंगे जब तक स्टोरी कर। मैं तब तक बुंटी लेता हूँ, बुंटी। ओ रिक्वेस्ट भी तो है। रिक्वेस्ट बाद में करूँगा, पहले बुंटी करूँगा। हाय कैथरीन, क्या चल रहा है? I think I was in a दोगे मुझे रिक्वेस्ट दो बेवकूफो। एक्सेप्ट क्वेस्ट। एक और एक्सेप्ट कर। क्या है इनवल्नरेबल टू इनवल्नरेबल टू फिजिकल डैमेज, टेक्स इंक्रीज एलिमेंटल डैमेज। ओके, I'll take that. I will take that. मिनट। अच्छा, यार गेम अच्छा। साउंड क्यों नहीं आ रहा? आ रहा है। वही I तो। won't hold मैं you आवाज़ back. करना, आवाज़ ऊपर करना भूल गया था। पागल है क्या तू? मैं कौन साउंड भी अरे नहीं आ चुप रहा। है। देखो तो स्ट्रीम पे सब ठीक है। अचीवमेंट टेस्टी जॉब चल सब रहे। ठीक है। कल किसका प्रैक्टिकल है? जिसका बचा। माइक्रो प्रोसेसर है, हमेशा भूल जाता हूँ। लिंक नहीं आया ना उसका भी अभी तो। मुझे क्या पता, मैं देखूंगा, देखता हूँ Off बैठ के we कल। go.
उसकी फाइल है नाम पे, हैं? फाइल है ना उसके अंदर। हाँ उसकी फाइल है, क्योंकि उसकी कुछ रिटर्न भी थोड़ी नहीं, थी। आज मैंने अब ऊपर से आज वो जो फाइल डिलीट हुआ तो बोला किसी ने खोलेंगे मुझे। अबे वो तो ठीक है, वो तो मैं जानता ही हूँ, पर मैंने ये भी कर था कि करेंगे वो, मैंने कहा था बस थोड़ी सी कर लेता फॉर्मेलिटी से। कहीं नहीं करेंगे, वो तो मैं जानता हूँ, क्यों कौन करेंगे वो। करेगा? अगर तू खुद सोच, वो भी तो इंसान है ना। अगर मान ले तू उनकी जगह होता, तू भी नहीं करता, क्यों करेगा? तुझे हाँ तो पता सब मैंने कब बच्चों ने बोला कि चीटिंग वो करनी है। करें, वो मैं जानता हूँ, और उन्होंने सेटअप ही इस टाइप से किया हुआ था कि वो वैसे भी कुछ नहीं करेंगे, तभी तो उन्होंने ज़बरदस्ती ऑनलाइन भरवाए थे सबको, सबको ऑनलाइन ज़बरदस्ती तूने उन्होंने कैसे इसलिए भरवाए थे। तो कह देते कि हम तो भैया ऑनलाइन कराएंगे तुम कुछ। मैं सोच रहा था मेरा एक दोस्त है, बस एक ही दोस्त है तेरा? ये मतलब एक दोस्त है, वो कह रहा था कॉलेज का ही है, कह रहा था कि वो लेने की कह रहा था तब 2003-2004 में। क्या होता है वो बॉडी बिल्डिंग का वो आता है ना, वो रॉड और वो चीज वो आती बीच साइड पे। पर रॉड और व्हील नहीं पता तुझे जिससे वो करते हैं एक्सरसाइज वगैरह। हाँ तो ले रहा था फिर। तो वही लेने की सोच रहा था मैं, क्योंकि भाई लॉकडाउन में पड़े टेस्ट हो रही है। हालांकि अभी थोड़ा चलना हुआ है बाहर तो सही हो गया, थोड़ा पैर वैर अब खुल रहे हैं वापस। हाँ वही कर नहीं है सकता मेरा है, वो लेना है उसमें, वो तेरे है ना? ऊपर है। तो ले लूंगा। लेना है तो फिर जल्दी ले लो। वही तो सोच रहा हूँ, लॉकडाउन अभी फिर लग जाएगा और मैं यहाँ बस बैठा रह जाऊंगा, वो गाड़ी क्योंकि और देगा कहेगा क्योंकि साली में। एक बार लॉकडाउन लग गया ना तो तू फिर उसके बाद तो लेने नहीं जा सकता फिर, और ना ही कोई ये है कि तू मंगवा सकता है कहीं से। तो अगर करना है तो अभी कर लो। अबे स्टोरी स्टार्ट हो गई क्या? Yes, yes. They have the ओ audacity स्टोरी to तो go मस्त है, after यहाँ जाना anything. पड़ेगा अबे फिर मैं स्टोरी के लिए। उसके बाद जाना पड़ेगा क्या, वो जो क्या एडवेंचर गिल्ड के सामने? हाँ वही 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 अबे गाने यार मैं लेके वहाँ पे जाने डेली पड़ेंगे कमीशन साथ कलेक्ट में करने वो। गया था, इन्होंने स्टोरी स्टार्ट कर दी। The अरे कोई seven नहीं दे दिया अभी। dragons, gods. No गाने तुझे ancient बताएगी कि artifact that किसी ने relates मेरे can escape their धुन चुरा ली। greedy ambitions. हाँ Still, this time is different. Who do they think they are, जाएगी going जाऊंगी after धुन the निकाल Abyss के। Order's treasure? Oh, traveler. बोला It's नया you. एरिया नहीं आया ना, पर ये आ गया। वो तो नया Huh? एरिया। Ganyu, what are you वो doing छोटा here सा with एक चार्ल्स Lauren? में क्या था Do you वो have a आने वाला commission you need to post? था, वो आए बाद में, Hello. अभी नहीं आया। We were just discussing the treasure hoard. Yes. कैश में हो We were just चार्ज। saying how even the audacious Easy treasure button. hoarders should तो know वो better दिन than में to से mess with the Abyss. चैज़म बोल It's बोल just दो too बंदे evil. कैज़म बोल के बोल गए। But we recently received intel from the बंदे तो Ministry इस of Civil गेम Affairs गेम को that गेम two को ऐसे big-time बोलते हैं, treasure hoarders in क्या Liyue and बोलते हैं, Mondstadt are planning some big joint गेम operation. गेंशिन इम्पैक्ट। Two big-time treasure hoarders. Yes. They're known as Big Sis of the South and Raptor of the... Oh, Raptor! Paimon remembers he tried to run away from Amber and Mondstadt. But who is Big Sis of the South? You are correct. She's the head of the treasure hoarders in Liyue. As I understand it, the treasure hoarders all call her boss. Some say that the god of thieves even bestowed a gift upon her for her exploits, making her Big Sis of the gods. Anyway, the treasure hoarders discovered some previously unexplored ruins that the Abyss Order has been secretly guarding in the shadows. Despite how dangerous that makes it, all the treasure hoarders can think about is what kinds of treasure could be inside. They have already devised a plan. They will send out a decoy to divert the Abyss Order's forces away from the ruins, then send an expert thief inside to steal the treasure. To this end, Big Sis and Raptor अरे have कहाँ तक reportedly पीछा recruited करेगा? a certain grand thief from Fontaine. Grand Thief? That's quite an impressive sounding title. Oh, indeed. He is an extraordinary individual. The Grand Thief is highly respected in the treasure hoarders, in the same way that we adventurers look up to great adventurers. Ah, so you're familiar with the author of the Tevat travel guide then? Correct. The Grand Thief is someone as renowned as her. So, despite being relative big-timers in Liyue and Mondstadt,
Big Sis and Raptor had to put in a lot of work to convince a thief of his status to come and personally oversee this operation. With the major changes in Liyue recently, the Ministry of Civil Affairs and the Millelith already have their hands full. They don't have any time to investigate rumors about treasure hoarder activity, but anything related to the Abyss makes me feel like there is some unknown danger lurking beneath the surface. So I decided to come to the Adventurers Guild to post a commission. Boom! Leave this commission to us. Oh, thank you so much. Good to see this in the hands of a reliable guild member. Well then, गलती हो गई मेरी एक। good luck. The guild will take care of the मेरा क्या details हुआ? of this commission. वो कमीशन एक्सेप्ट हो गया, मतलब एक तरह से कमीशन ही बोली मैंने। स्टार्ट हो गया अब। अरे मतलब जो स्टोरी है उसका Ad एनिमे Astra में एक तरह से Abyssosk. बोलते नहीं कमीशन अच्छे उसके हाथ में चली गई। कमीशन अभी तक ली नहीं तूने डेली कमीशन? वो डेली नहीं, Ad ऐड Astra. खोल के रहा था मैं। तो हटाना उसे जल्दी से। हाँ। स्टोरी है। Ad. हाँ तो स्टार्ट हो गई कनेक्ट है। करवाने गया था तुझे। कमीशन तो हो स्टार्ट गई हो थी। गई तो तूने डेली कमीशन ली नहीं ली? रिवॉर्ड हाँ। वही ले रहा हूँ। हो गया, ले लिया। तेरा बीपी लेवल क्या है? 40 40 करेक्ट है? 45 तो होगा। 49 49 तेरा तो मतलब मैक्स हो गया, तू करेगा वैसे। एक्स तो क्या 60 पे होता है 50 यार। क्या करूं मैं ये बीपी का दिमाग खराब करते क्यों नहीं कुछ? ये मैक्स होने के बाद इसमें कुछ एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स भरो ना। मैं तो चला आराम एक आराम से डेढ़ ही महीने करूँगा। पहले मैक्स मेरा हो जाता है। 40 हुआ है अभी मेरा। अबे बेवकूफ, मैंने तो इस बार हार्ड किया भी नहीं कुछ इसमें। मैंने तो एक बार आराम से किया है, तब भी हो गया इतना। मेरी तरह आराम से वरना मैं करना, कुछ बिल्कुल ही नहीं होगा। अब मैंने तो नहीं तो मैं हर बार तो ऐसे कर देता था, हर वीकली मिशन तो सारी लगभग कुछ कर देता था। इस बार हाँ तो तो ये मैंने ध्यान भी नहीं दे रहा था। वो क्या होता था, एक हफ्ते पहले हो जाता था। भाई तो क्या है ये क्या गलती थी मेरी? साला इतना वो ये करना चाहिए इस बार। बस मैसेज डाल दूंगा इनके लिए ऑफिशियल न्यूज़ पे, क्या पता देख लें। वैसे तो ये खुद ही कह रहे थे कि हमें क्या करो इसके बारे में सजेशन। वैसे कोई सजेस्ट करने वाली चीज़ नहीं है, तो पता होना चाहिए। Oh, I'm looking forward to this. बैटल पासेस में ऐसे रिवॉर्ड्स होने चाहिए। पता रिवॉर्ड्स कैसे होने चाहिए इसमें? होने चाहिए इसमें उसका आइडिया मतलब अंदर अच्छा ये उसके अंदर आ गया मैं, जहाँ पे भी मैं जाने को बोला था। There यहाँ are अंदर signs of treasure hoarder activity here. चेस्ट होंगी ना, हट They जाओ must have come to these ruins. या बस ऐसे चलता Let's जाऊँ। go deeper inside. Paimon sure hopes Ganyu's information is reliable. नहीं मतलब कहने का मतलब थोड़ा सा एक्सप्लोर करता जाऊँ या ऐसे ही चला जाऊँ सीधा सीधा, ये पूछा था मैंने। There aren't many guards here. Looks like their plan to draw away the Abyss Order's forces really worked.
should be the right direction. But दो why does it feel stranger and stranger as we make it deeper into these ruins? कौन Be careful now. Paimon's right मेरा behind डिस्काउंट हुआ था you. मुझे लगा तेरा डिस्काउंट हुआ क्या होगा तू मुझे क्या लगा मुझे लगा हुआ होगा फिर मेरा हुआ होगा मैंने ध्यान नहीं दिया होगा पागल तो नहीं हो गया ना तू क्यों लगा लगा तेरी बात है उसमें क्या है कॉलेज वाला दोस्त ही पागल कर देते हैं चल जब तक तू ये कर रहा है तब तक ये वाले इवेंट कितना टाइम बचा है ये जो चल रहा है अभी विश्व तो लास्ट डे है ना इसका ये चीज़ है कल हाँ एक लास्ट वाला खुल जाएगा फिर उसके बाद कल 500 करने के बाद वो एक्सप्लोरेशन भी खुल जाएंगे नहीं वैसे कह रहा हूँ कल अगर तू करता है तो उसमें फिर एक्सप्लोरेशन भी खुल जाएगी ना सेकंड पार्ट जो है उसका वो क्या है अब उसके अंदर ये था ना कि तो 500 एरिया एक्सप्लोर कर लेता है तो फिर पता नहीं कुछ एक्सप्लोरेशन खुल जाएगी उस एक्सप्लोरेशन को कंप्लीट करेगा तो तेरे को फिर वो मिलेगा ओशन आइड वाला वो This looks like a person. Could it be the Grand Thief? Why is he in that position? Is he praying to something? That's... Why is the statue of the Seven hanging upside down? And the statue's hands... Paimon remembers they're normally holding an orb, right? But this statue is holding... What is that? ये मेरी नॉर्मल टोन भी नहीं जितनी थोड़ी Paimon has a really bad feeling about this. नॉर्मल टोन मेरी इतनी ज़्यादा हाई पिच And the Grand Thief hasn't moved an inch. Do आवाज़ होती है you लो पिच think हो गई है he's... मेरी आवाज़ इतनी क्या बताऊँ ये कौन सी स्टैचू है जिस स्टैचू पे आए हैं Are you okay, अगर मैं mister? बॉलीवुड या हॉलीवुड में होता ना तो किसी विलेन को आवाज़ जाता ये तो गारंटी है ऐसे He's टाइप dead. की Paimon doesn't feel so good. क्या कह रहा हूँ ऐसे कुछ चल रहा होता है कहता आपकी Let's हीरो get out of वाली here, आवाज़ and नहीं है fast. We should report back to Ganyu and Lon. मैं पूछ रहा था जो ये स्टैचू मिली है कौन सी स्टैचू है We can't stay here. Quick, run! मैं कह रहा हूँ यहाँ पे एक स्टैचू है ना जो विंड वाली की स्टैचू जैसी है बस इसके पास और की जगह कुछ और है चुपचाप वो करता रहे तू करता रहे मैं नहीं बताऊंगा देख ले कोई भी जाए इसको कुछ करना नहीं है वहाँ ज़्यादा चेस्ट वगैरह का ध्यान रखिए वहाँ चेस्ट है हल्की फुल्की चौमन चेस्ट दाएं बाएं अभी तो बहुत तगड़ा सीन आएगा सुन तू कोई हीलर ले गया पार्टी में अपनी बैट है मेरे पास वैसा हीलर नहीं वैसा डेडिकेटेड हीलर नहीं अभी पता चल जाएगा क्या कह रहा हूँ मैं भी नहीं ले दिक्कत ये है कि यहाँ का प्लेटफॉर्म गायब है मैं जाऊँगा कैसे आगे अच्छा तू वहाँ पहुँच गया वहाँ तक प्लेटफॉर्म यहाँ तक गायब है हाँ मैं साइड में खड़ा हो गया था वो प्लेटफॉर्म गायब हो गया हाँ तो प्लेटफॉर्म गायब हो जाता है तुझे गिरना पड़ेगा अच्छा गिरने के बाद फिर क्या रिसेट हो जाएगा ना गिर के कुछ दिक्कत तो नहीं मतलब हाँ हो जाएगा लेकिन तेरी हेल्थ भी जाएगी और वैसे भी तेरी हेल्थ अभी भी जाएगी नहीं हेल्थ मतलब जा चुकी थी वो साइड में खड़ा हूँ ना तो अब नहीं जा रही मेरे को लगा साइड में कोई चेस्ट वगैरह हो सकती है तो मैं रुक गया था साइड में हाँ है ना है चेस्ट है वहाँ पे साइड में वहाँ चेस्ट के साथ मेरा एक सीन भी हो गया था पता क्या हुआ वहाँ पे वो साइड में डब्बे नहीं रखे रहते चेस्ट के साइड में हाँ उसके साथ मेरा कुछ सीन हो गया था मैंने काया निकाला हुआ था और मैंने क्या कर रहा था मैं चेस्ट से मतलब ऐसे उस डब्बे के ऊपर चढ़ गया मैं गलती से उससे क्या हुआ बताता हूँ उससे क्या हुआ यार
मेरा वो हुआ था क्या कहते हैं उसको, अब मैं साइड में चेस्ट लेने के लिए रुका, चेस्ट तो ले ली पर वो प्लेटफॉर्म पर रीसेट करना पड़ेगा। तुझे यही करना पड़ेगा, पहले एक एक करके वो कर रहे तो अगर तू एक दूसरे में ऐड करना बहुत तब तो हार मर ही जाऊंगी, प्लेटफॉर्म पर तो गिर चुका होगा। तो कर दिया होगा। पर इससे तो फिर मेरा कैरेक्टर मर नहीं रहा। क्या मतलब? शाओ मर गया मेरा, और फिर जिंदा ही नहीं हो रहा। तो जिंदा क्यों होगा वापस? वैसे तो चारों कैरेक्टर मर जाएंगे। हाँ तब इसका मैंने पूछा था, इसको डेडिकेटेड हीलर लाया है नहीं। तो अब चारों मर जाएंगे तो क्या फिर स्टार्टिंग से करना पड़ेगा। लास्ट पॉइंट पे आ जाएगा, समझ लो क्या कर रहा मैं मारा नहीं था हालांकि। चेस्ट तो सारी ले लिया, मुझे को बस सीधा जाना है। ले ली। अब पता कब जाएगी सुन, वहाँ एक बार मर और स्टार्टिंग में खड़ा हो, जैसे वो 3 बबल आते हैं ना, हाँ। वो 3 बबल जैसे ही आके गायब हो तभी भगना चालू कर दी। नहीं तो जब तक तू वहाँ तक हो गया पहुँचेगा ना तो वो 3 पार हो बबल गया। बीच में आ जाएंगे। बीच में आए थे मैंने, हाँ बीच में आए थे, मैंने साइड में खड़ा हुआ, निकल गया, फिर आगे चला गया मैं। तो मैं तुझे तरीका भी बताऊँ। अब नहीं होगा, अब कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे दो कैरेक्टर मर चुके हैं ना, बैनेट और शाओ। तो अभी तो बाहर आ जाएगा यहाँ से, दिक्कत नहीं होगा। अभी नहीं आएगा। अभी तो ये आया है, क्या नाम है इसको, मतलब लड़ना है तो मेरे को मेन शाओ लाया था और बैनेट लाया था। मैंने कहा था बस ये दो रख लेता हूँ फाइटिंग के लिए, बाकी ऐसे ही रख लेता हूँ। वो बचे हुए दो बचे आधी हैं। हेल्थ पे भाग जाएगा, ये दिक्कत ना आए। You have come here as a herald. I will mete out your punishment. हाँ, अगले बच्चों को मुश्किल नहीं लगा था मुझे, तो मैंने तो साले को 3 बार इतने आराम से मार दिया। तो मैं तो लाया ही नहीं ना डैमेज, 10-10 का डैमेज दे सकता हूँ मैं इसको। हाँ बेकार कैरेक्टर ही लाया हूँ बाकी तो मैं। सिर्फ पड़ा है। Dainsleif. Oh, I thought you were just a couple of pests that stumbled in here by mistake. So, you are with Dainsleif, that constant annoyance in our affairs. Did he send you here to die? His resistance against the Abyss has gone nowhere for a long time. There is nothing you can do to change the tide. The Abyss is unstoppable. What is this power? Pirates never seen it before. Careful, please don't 800 get लेना चाह रहा है और नॉर्मल स्क्रैच से 200 होगा। स्पॉइलर अलर्ट है। Cool it. Dodge this. बैनेट नहीं है, हील कर लेना उसको, खाना खा के। चल ठीक है। Let's light it up! मतलब मेरे तरफ से वो 8000 का डैमेज ले ही रहा है। drop. ये भी मुश्किल है, इसके अटैक से बचना बहुत आसान है। बचा क्या ना, मुझे लगा मैं लग गई हूँ। Starfall. अच्छा तो काफी ज़्यादा Freeze. ये वाला अटैक थोड़ा मुश्किल है बचना। ये वाला मैं कोई सा डैमेज नहीं करता है। अगर मैं कोई सा भी डैमेज नहीं करता है। Let's light it up!
नहीं जाऊंगा तो यूज कर दिया। Why do they never miss? Dodge this. कुछ तो मिस ही कर दिया। हाँ Let's तो light कौन it किया up. बैनर को कर दिया अच्छी तरह से और बस और काय वाली का कोई जाए मुझे हाँ भाई जिसको मैंने सबसे पहले आधी हेल्थ पे आ गया। वो तो मेन कैरेक्टर है तो फिर उसका अगर अरे नहीं अभी लगता है That's gonna hurt in the morning. Ha! थोड़ी गलती लगी तो आधी हेल्थ पे आ गया। Everybody stand back. अरे वो गलत कर दिया ना करना नहीं चाहता था ओ इसके सामने फायर की शील्ड काम नहीं करेगी वाटर में Don't push your luck. Cool it. हो गया This power, it seems familiar. I see. So it's you. You are the one. In that case, I shall stay here no longer. What a tough battle! Are you okay? Oh, such a strong enemy. Who knew the Abyss Order had monsters this तेरे गेम की powerful among फ्रेशनेस them? बहुत कम नहीं लग रही? Huh? हाँ What is it? What are you thinking about? हाँ तो कम होगी पर मुझे अच्छी लगती है Oh, right, yeah. टीम पे अच्छी We're near the लगती है। exit now. Let's get out of this scary place before something even more dangerous shows up. देख लेना चाहिए बड़ा है इसको थोड़ा। तेरी कितनी है मेरे तो 20% के आसपास है। 20% गेम के अंदर सेटिंग्स में 20% ये गेम के अंदर नहीं पता मेरे कितनी है। ध्यान में तेरी कितनी है? देख रहा हूँ इसलिए मुझे खत्म हो जाए जरा गेम के अंदर तो ब्राइटनेस का है भी नहीं शायद जहाँ तक मुझे पता है। So, we meet again. A little sooner than I had expected. Hey, it's Dane! Judging by your कोई मैं चेक expression, करता हूँ गेम के अंदर है क्या It seems you just experienced something quite strange. Could it be that you encountered an Abyss Herald in those ruins? क्या? क्या लिखा है? Huh? क्या How did you know that? सब गोल। हाँ I've been on the Abyss Herald's trail. I didn't expect to find you here as well. मेरे को बस ये मुझे ब्लैक लाइन है ना उसके बैकग्राउंड में कुछ लगाना तो वो नहीं लगाया अभी तो DevilGAMER YT कितना जल्दी कर बोली। अरे मेरे को वहाँ पे अभी तक कुछ समझ नहीं आता क्या An लिखूँ मैंने अभी inverted जो लिख दिया statue मैंने of कहा the बाद में कर seven, लूँगा जरूरी holding नहीं abyssal लिखना, सब power गोल in its लगा hand. के Tell me होता the rest of what happened in there. So you escaped the ruin depths खाली filled लग with रहा था मेरे abyssal को इसको power. लगाने के बाद And then? अबे सब गोल बीचों बीच रखा ना भैया। यार बीचों बीच के बाद दोनों साइड बहुत जगह पर हो रही थी थोड़ा सा बड़ा करने के बाद भी कुछ फर्क And नहीं then, पड़ता। as तो we अजीब got सा लग close रहा to the था exit, an Abyss Herald suddenly appeared and blocked our way. चल ठीक है We पढ़ fought दूंगा a big battle with that thing. Maybe it hasn't gotten too far yet. अरे सुन हाँ अभी इसमें एक ऑप्शन आएगा जिसमें ऐसे Yes, पूछेगा कि this अपनी is a story rare बताओ, opportunity जिसमें तू वो कर indeed. रहा होगा। काफी Come, सारे ऑप्शन आएंगे let's कि catch up सारी to it. बात, पता नहीं बहुत सारे ऑप्शन आएंगे उसमें ना मुझे बताइए एक बार मैं बताऊंगा कि क्या चूज करिए। मैं एक चीज चूज करी थी मुझे चेक करना है कि उसके अलावा This कुछ is चूज the करने से या कुछ और let's catch up to it क्या हो गया? कुछ मैं पढ़ रहा हूँ क्या लिखा है yes this is the rare opportunity indeed come let's catch up to it yes sir wait I thought it was the only who commissioned you ये नहीं बेवकूफ अभी बहुत सारे ऑप्शन आएंगे एक जगह हाँ पे। वही तो मैं इसमें जब सोच ना रहा वो चल रही होगी हूँ yes sir बोल रहा हूँ मैं तो बस इसमें हाँ, Let's go! नीचे A वाला rare था, नीचे वाला। opportunity? अब तो कर With दिया Dane helping out, maybe we'll be able to solve more सुन, उसमें mysteries पता क्या about होगा, the तुम लोग Abyss. बातें कर रहे हो जिसमें एक वो इनका बहुत पहले 500 साल पहले एक विलेज डिस्ट्रॉय हो गया था टायरेंट या करके
अच्छा तो उसके बारे में बातें चल रही होंगी, तब ये बताएगा कि हाँ मैं जानता हूँ। अच्छा सब गोल अब ठीक लग रहा है? क्या? अब लग रहा है ठीक सब गोल? हाँ ठीक है। इसके अलावा एक दो चीज़ें और ऐड करा देंगे तो गूगल पे, अरे यार मेरे को हील करना चाहिए था। या तो गूगल पे या फिर वो ऐड करा देंगे इसके नीचे, क्या कहते हैं उसको, फेसबुक इंस्टा, है ना, हाँ वो ज़्यादा अच्छे लगेंगे। और वो साइड में एक वो सब चैट वाला वो जो चलता है वो भी ठीक ठाक लगता है, मतलब छोटी सी जगह पे लगाने करना को है। तो कुछ भी लग जाएगा, तू बस बोल दे। हाँ तो नीचे करेंगे, रुक जा, फेसबुक और किस वाला स्टिच करेंगे, इंस्टा, फेसबुक इंस्टा और डिस्कॉर्ड। लैग हुई क्या स्ट्रीम? क्या? मेरा स्ट्रीम लैग हुई क्या या नहीं हुई? नीचे देख रहा हूँ सारा डिज़ाइन। तो मुझे बता दी तो वो वाला ऑप्शन, मतलब बहुत सारे ऑप्शन आएंगे तेरे पास में तो। अभी तो इस बार स्पायर लबिस वगैरह से लड़ाई चल रही है। यार मैं क्या दबा रहा हूँ बहुत पता। This moment will be frozen. Free. Don't push your luck. Teamwork is dreamwork! Shade! Starball! इसमें बस वो क्या बोलते हैं, वो जो मेन वो बनाता है, तो क्या बोलते हैं, एलिमेंटल स्किल। वो नाच रहा था ना, मैं वो स्पायर लबिस नाच रहा था, तो मैं सोचा एलिमेंटल मारना रुक जाएगा, पर एलिमेंटल मिस कर गया था। No. They were just digging through these abandoned ruin guards looking for something of value. Oh, is that so? The Traveler here seems to like doing that a lot too. Looking for chaos devices, chaos circuits, you know, that kind of stuff. They wouldn't be searching for such ordinary objects. In fact, I was nearby investigating precisely because abyss mages often come out from that ruin to explore. They seem to be searching the remains of ruin guards for a certain valuable object अभी तो रूइन to गार्ड take के बारे back में to the बात कर रहे हैं। ruins. However, they look disappointed, so it would seem they haven't found it yet. Well then, why didn't you grab one of them just now and ask what they were up to? I certainly don't mean to be merciful towards these monsters of the abyss, but I have a feeling that their plan with this object is of major importance to the entire Abyss Order. One cannot discover the truth behind it through interrogation. Or rather, these Abyss mages likely fear something else much more than they do a painful interrogation. ध्यान दियो, उनको बताइए, बहुत सारे ऑप्शन आएंगे चूज करने। 5 या 6 ऑप्शन आते हैं I'm लगभग, just getting 6-5। goosebumps thinking about all of this. All right, we shouldn't waste too much time here. Let's continue our search. अब तो निकल गया आगे सर्चिंग पे। Useless. अच्छा इसमें वो देख सकते हैं, ब्राइटनेस का ऑप्शन है क्या?
ब्राइटनेस का क्या देख रहा था? ब्राइटनेस का ऑप्शन है क्या गेम के अंदर? मुझे क्या पता है शायद ये नहीं। नहीं है ना। Useless. Disappear. Worthless. Worthless. Let's light it up! Going in! Freeze. Crumble apart! Starfall! What's this? Frostbite. Freeze. Everybody stand back! Get out of my way. Cool it. Off we go! Why do they never miss? I'm going in! Dodge this. Let's light it up! Yeah. Teamwork is strength! Adventure time! Oh, so sorry. Dodge this. Let's light it up! Get out of my way. What's the hurry? Don't push your luck. That was नहीं unexpected. I'm going in! वाले को पकड़ रहा है वो। रिकनेक्शन सक्सेसफुल। Seems wherever we find an Abyss Mage hideout, there's often a bunch of ruin guards roaming around too. Is that just a coincidence? There are no coincidences in the world.
Everything is the fruit of seeds planted long ago, just like your appearance in that tavern. Time is just waiting for those seeds to sprout. Forget it. Just some needless musings. The connection between the Abyss Order and the Ruin Guards is by no means incidental. Rather, they are both branches that have grown out and up from the same roots below. Branches? Roots? What do you mean exactly? Both originate from an ancient nation that was destroyed 500 years ago. अब शायद बात स्टार्ट हुई है Kanya. 500 साल पहले। ध्यान दिए। Huh? Conria? Really? The Abyss Order and Ruin Guards are left over from after the destruction of that nation? Oh. Speaking of Conria, that's really a super ancient name. Oh, right. As your guide, Tyrant should explain a bit here. A long time ago, the nation of Conria was... Huh? You have memories of being there. But that nation was destroyed 500 years ago. Is that so? Well, everyone has their secrets. You did not pry into mine, so I shall not pry into yours. But, if you would like to tell me, I will listen. So, अब यहाँ पे the 4 Conria ऑप्शंस है, you उसने saw, पूछा कि तुम बताना चाहते हो what तो was it बता like? सकते हो। और क्या बता? Well, I can't hide it from him any हाँ longer. ये वाला मैंने चूज किया था और बता नीचे क्या है? Dian and ये जो भी जगह का नाम है, it's worth a shot. और The person who woke me up and the seeds of flames. और क्या? वैसे 4 ही हैं। क्या the person who woke me up and लास्ट वाला है and that sea of flames. limbs स्ट्रीम पे देख लेना। flames हो गया को हाँ तो फ्लेम्स ही बोला मैंने। देखना से कौन सा चूज करना चाहिए? the person who woke me up। इसको यहाँ पे स्नैपशॉट नहीं कर सकते मतलब ये वाली स्टोरी के ओह अच्छा ऐसा कुछ सीन होता है ना शायद इस गेम में कि तू स्टोरी को डायलॉग्स को बार बार चूज करके देख सकते हैं कि आगे क्या बोलना हाँ। है शायद कहीं पता कहाँ वो तेरा उसमें होता है ना, जो तेरी ये ऊपर जो सेट पाइमॉन वाली वो होती है, उसमें जाके कौन सी किताब होती है? नहीं, तू वो कर द पर्सन हु वोक मी अप बताइए क्या है उसमें। The traveler tells Dian about the sea of flames. So that's the complete मतलब story, बताया, huh? स्टोरी बता दी बस पूरी। Paimon thought that you ran into that unknown god नहीं first. कुछ नहीं दिखाया। हाँ मेरे को नहीं पता मुझे लगा था वही हुआ था कि जब ये पहली बार इस वर्ल्ड में आए थे ना हाँ। तो तब आए थे इस वर्ल्ड I में see. जब ये 500 So साल your पहले यहाँ पे first gods memory वगैरह after नहीं थे, coming वो to this actually world लोग was being रहते थे awoken बस, by your brother normal from लोग। within that और उनका बहुत meteorite. बड़ा सिविलाइजेशन था फिर वहाँ पे गॉड्स आए और उन्होंने लड़ाई वगैरह चालू कर दी ना उनके साथ मतलब तो ये तब आए थे तो तब वो पूरी जगह डिस्ट्रॉय हो गई थी ना जो यहाँ की मेन सिविलाइजेशन थी हाँ। तो वही कि इन लोगों ने फिर टाइम ट्रैवल Seems करके इस your वर्ल्ड में brother आ गया woke है और up फिर हम यहाँ से first. जाने वाले थे But the question डेंजरस is, प्लेस है तभी how जब long ये जाने before वाले थे you? तभी वो नहीं हुआ उस गॉड ने इन्हें रोक लिया हाँ। तो भाई उससे पहले बस एक सीन हुआ था कि जिसमें ये जगह जब डिस्ट्रॉय हो रही थी तब ये दोनों बेहोश हो गए थे और And इसकी then your बहन ने इसे brother उठाया told था you तेरे that the वर्ल्ड में इसके destruction of भाई ने इसे Kanria उठाया plunged the whole world into मतलब इसका भाई chaos, पहले उठ गया and that you two था should काफी leave टाइम this पहले world तो वो called पूरा देख Teyvat? रहा था जब वो वर्ल्ड तबाह हो रहा था वगैरह वगैरह और ये सोया पड़ा था मतलब बेहोश था तब उसने इसे उठाया तो फिर टाइम ट्रैवल करके आ गया वर्ल्ड में और ये जाने वाले थे इस वर्ल्ड से तब वो गॉड ने रोक दिया नहीं क्या हो गई ये वो मतलब कहने का मतलब ये है कि मैं कह रहा हूँ वैसे तो मतलब है तो सब कुछ सेम ही ना, बस ये होगा कि मेरे में कैरेक्टर में स्विच ही तो होंगे वरना बाकी सब कुछ सेम ही है ना। हाँ तो ऐसा तो नहीं ना कैरेक्टर स्विच करने से थोड़ी सी स्टोरी में भी चेंज हो। पागल है क्या स्टोरी में change The बता destruction वही है of वही बता रहा है Conria? उसे कि हाँ He उसके बारे में said मुझे that? पता है और हम यहाँ पे थे तब अभी तो बहुत कुछ अब That खेल रहा है destruction you witnessed, that's history from 500 years ago.
It seems the first time you awoke in this world was indeed during that period. So your brother must have understood this world better than you did, because he woke up first. And it was shortly after that that you encountered an unknown god who blocked your path, so you couldn't escape. Oh, Paimon knows this part really well. I understand. When you awoke at that time and hurriedly tried to leave for another world, you didn't know anything about Khaenri'ah. But now, since you have come to gain some understanding of Teyvat, you are able to guess that the war you witnessed all those years ago must be the war that ended Khaenri'ah. Am I right? Ah, if that's the case, you must have been flipping through all sorts of books during our adventure these past few months. Before going to Mondstadt, you had just looked at some vague materials. Later, we managed to gather a whole bunch of old books from all around Mondstadt and Liyue, but you told Paimon they were useless. So, the whole time you were just trying to learn more about Khaenri'ah so you could find your brother? Oh, yeah! You can travel around the 7 nations to find the 7. But where can you go to find a nation that was destroyed 500 years ago? I probably know more about Khaenri'ah than both of you. Khaenri'ah was a nation without a god. Not because it had a god that died or abandoned them, but because it never had a god to begin with. It was a powerful nation, built purely by humans. An unprecedented, flourishing, and glorious civilization. It was the pride of humankind. A nation without a god? Later events unfolded just as you remember. It was all destroyed by gods. You mean that... 500 years ago, the gods descended upon the world and brought desolation to Khaenri'ah. The pride of humankind was uprooted and crushed, like a weed removed from the garden of the gods. How could that be? The history books don't say anything about that. Yes, well, continuing to discuss the past now will only dampen our spirits. Let's keep moving. I will tell you more of what you want to know as we continue our search. अभी और है क्या रहा? कुछ नहीं कितनी बची है अभी आगे तो देख ले तो खेल लेना, अभी तो लंबी है। नहीं मैं ये जाना नहीं, बस इतनी जल्दी खत्म हो गई है कुछ ऐसा तो पूछ रहा हूँ। Useless. Useless. Over there! It's more ruin guards and abyss mages. Dane was just saying how these ancient machines are from Khaenri'ah. So, did Khaenri'ah have a lot of ruins that needed to be guarded? No. Ruin Guard is the name modern people have given these machines. No one called them that 500 years ago. These Ruin Guards were known as Field Tillers by the people of Khaenri'ah. नहीं अभी पता नहीं एक और जगह है यहाँ पे एक और रुइन गार्ड और दो स्पायर अबिस मेजिस हम और बात कर रहे हैं कि रुइन गार्ड को पहले क्या बुलाते थे। Field tillers?
फील्ड What a टिलर। strange name. हाँ वो तो मुझे मैं कर चुका हूँ। हाँ तो वो अभी वहाँ पे पहुँचा हूँ अभी तो। It's not like you think. Field Tiller was just a code name. The people of Conria like to give code names to their weapons. The land is not to be tilled with farming tools, but rather is to be fought for with steel and blood. This is how the Field Tiller came about. Fought for with steel and blood? Well, that's an interesting way of understanding tilling. Paimon doesn't think it's a very positive interpretation. After the destruction of Conria, these masterless field tillers went completely out of control. They wandered aimlessly over the centuries, gradually spreading to every corner of Tevat. Perhaps resonating with the sorrow of other civilizations lost to time, they found their way to various ruins across the land, where they lie dormant. That sounds so sad. Once you understand more, those details won't mean much to you. But no matter their past, all that remains of them now is the danger they pose. So destroy them all. Let's light it up! That's it. Disappear. Teamwork is strict! Why do they never met? Boring. Dodge this. Evil conquering. Worthless. Huh? This abyss base dropped a talisman. Could it be a communication of some kind? This talisman seems connected to the Abyss Herald. But why would an Abyss Mage be carrying it? Perhaps it really does contain information about their operation. But Paimon can't read the writing on it. Is that the script of Conria? Engulf the faith of the enemy in flame, and bring glory to His Highness the Prince. What? Is that what it says? Loom of Fate, initial operation. They, the Abyss, seem to be carrying out a large operation. The keyword here is Loom of Fate. It seems like they are still launching the operation, or rather, are still conducting preliminary tests. Loom of Fate? What's that? Is it literally a fate-leaving machine? From the horrible feeling Paimon's been getting, अभी इन्होंने बोला those कि eerie ruins प्रिंस are के लिए कर super रहे हैं likely to ये। be related to this fate-leaving operation. हैं? So, Dane, तेरे में क्या what था? message प्रिंस does के this लिए? talisman contain? Princess. तेरे प्रिंसेस बोला था? I'm reading it now. ये कोई कहने की बात है? वो तो मुझे पता है, मैं तो पूछ An रहा हूँ। ambitious operation. But some parts are difficult to understand. How so? In short, the first phase of the plan is related to Osial, Overlord of the Vortex. The Overlord of the Vortex? You mean that god in the ocean? बिल्कुल का सही है। बिल्कुल के उसमें अभी लेटेस्ट शॉट में 1.2 के व्यूज हो गए। जेड चैम्बर क्या था? चैम्बर वही जो उसका वो था किला। कौन सा किला? अच्छा हाँ वो सर्कल किला, हाँ किला। ठीक है याद आ गया मुझे।
चाहता साले को नहीं आता। What do they want with Osile? आ गया यार उड़ने वाला जो सब खिलाता बड़ा सा। I know of your past heroics regarding Dvalin, and I also know of the Abyss Order's role in the Storm Terror incident. Though you may not have been aware of it at the time, you were thwarting an Abyss Order operation similar to this one. Last time it was Venti's old friend. This time it's a huge ancient god. The Abyss Order keeps setting their sights higher and higher. Will the Abyss Order use their lies and dark magic to corrupt Osile, just as they did Dvalin? No. From the contents of the talisman, this operation goes one step further. They won't just corrupt Osile's mind. They also plan to use the ancient technology behind the field tillers to completely transform Osile's body. Is that even possible? So wait, the Abyss Order wants to make some sort of cybernetic squid god of mass destruction? Very few people today truly understand the civilization of Khaenri'ah. Though of course, the accuracy of that understanding itself is difficult to judge. Only the Abyss Order has consistently sought out the remnants of Khaenri'ah. Despite being far from human, they seek out this lost human civilization quite persistently. The talisman's message states that they will use the defiled statue as a base, attaching Osile's limbs to construct a mechanized god, and the new core that shall replace the orb usually held by the Statue of the Seven is the eye of the very first field tiller. The eye of the very first field tiller? Oh, Paimon gets it! All those Abyss mages are looking for the special eye, right? It would seem so. This whole thing keeps getting more complicated. But basically, it all has to do with that eerie statue of the Seven we saw, right? Yes. According to the talisman, the eye should be placed in the hands of the defiled statue, thereby imbuing the newly born god with the power to topple the divine thrones of Celestia. Oh boy, the Abyss Order sure isn't holding back with this plan. Since no one knows where the first field tiller is, how about we take the information about the statue as the starting point for our investigation? Yeah, that tone-deaf bard is too difficult to track down anyway. Let's go to the cathedral first and ask around. Maybe we'll learn some... The cathedral. Huh? What's the matter, Dane? Nothing. Let's get moving. A huge statue, a grandiose cathedral. The people of Mondstadt clearly spent a great deal of resources and energy to construct them. But how aware of this was the Animal Archon on receiving this gift? And how much did he give back in return? Faith doesn't ask for anything in return, though, does it? As long as the gods have a clear conscience about it all, there's nothing I can say about it. Shh! We're about to enter the cathedral! Don't say anything bad about the Animal Archon! And actually, the Animal Archon is... never mind! I never specifically said I would enter the cathedral. I'll leave you two to mingle with the sisters. Huh? You are the honorary knight of Mondstadt. They will surely allow you to poke into these affairs with their utmost trust. Having me tag along would only make them suspicious. Correct. And just as our little friend said, I might say something bad about the church at any time. When a non-believer steps onto holy ground, the result is never pretty. I have never received the favor of the gods in the past. That's enough about that.
While we've been chit-chatting, the Abyss Order continues to act. Okay, then we'll just go in ourselves and ask correct. I should warn you about one thing. Don't go mentioning the defiled statue inside the cathedral. The Church of Favonius wouldn't ignore the matter of the statue. But if they rashly tried anything against the Abyss Order, it would only ruin whatever element of surprise we may have. Also, meddling in the affairs of the Abyss usually doesn't end well for any. Boring. Honorary Knight. Hi, how have you been? Do you need anything today? But I should first make it clear that if you need to borrow the Holy Lyre to Hermel again, we cannot oblige. It seems she hasn't realized it's just an illusion. Oh, we're here to ask some questions about something. Barbara, have you heard about the first field tiller? What's that? Field tiller. What does it do? Of course you wouldn't know anything about that. Okay, next question. Has the church ever lost a statue of the Seven? Huh? You're here to ask about that old story? Well, I didn't expect that. That was such a long time ago, barely anyone mentions it nowadays. A long time ago, there was indeed one statue of the Seven that disappeared one night without a trace. Nearly every member of the church joined the search for it, but it was never found. In the church's records, as you might assume, this incident has been called the Lost Statue of the Seven. Of course! Of course? Nothing? So do you have any other clues? Paimon means any other strange stories? Sorry, Barbara, but we can't tell you about the statue we saw just yet. Like Dane said अभी outside. कैथीड्रल के अंदर हूँ, बारबेरा से बात कर रहा हूँ। Good. Other strange stories? I'm not sure. उन्होंने बोला उसे Let जाके me think पूछना about उस what other स्टैचू के बारे unusual में incidents are in the church's उस records. रात में। Oh, the Tyrant's final fury? No, that's from another time. Probably unrelated. बता रही है ना कि बहुत पहले स्टैचू चोरी हो गई थी। The Tyrant's final fury? Oh, this refers to a time of great danger that engulfed old Mondstadt, the place now known as Storm Terror's lair. इन्हें अभी तक ये नहीं पता कि जो क्या था वो टीयर था, जो क्या नाम था उसका, वो नकली है इनके पास। Many years ago, चोरी किया था, there was a बस नकली time है when इनके balls पास। of fire would rain from the sky whenever anyone approached old Mondstadt. हाँ मतलब वही इल्यूजन नकली हुआ है। Balls of fire raining from the sky? How terrifying! हाँ मतलब वही है। तो वो तो मुझे पागलपंती लगती है, इनको पता होगा, बारबेरा को तो कम से कम पता होना चाहिए क्योंकि इसके पास विजुअल। People at that time believed it was a curse laid down by the god of storms, so they referred to it as the Tyrant's final fury. ब्रेकअप नहीं कर ले रहा कौन? नहीं। This strange phenomenon continued for about a year. मेरा No मेन one was ever लड़की। able to solve it. It just gradually ceased on its own. मेरा मेन कैरेक्टर लड़की है। तो क्या लड़की है? अच्छा। Right. Later, the theory of the Tyrant's final fury became less probable in the eyes of the church. Common reasoning dictates that the god of storms wouldn't shoot fireballs. हो सकती है। Perhaps it was something else that caused the disaster. Anyway, this incident might not be related to the lost statue of the Seven, but I just can't think of any other strange incidents that might be. It's okay. Thanks, Annie. There's that pointless word, thank you, again. I can never get used to hearing it. Oh, Rosaria, it's you. If you're looking for the Knights of Favonius, they're busy with those monsters again. Those monsters?
Those monsters that tried to attack Mondstadt last time during the Storm Terror incident? Wasn't that the Abyss Order? They're at it again? मुझे तो याद नहीं है उसके बारे में कुछ भी. Indeed. They're gathering in Wolvendom, causing great unrest among the wolves. Could it be that the Abyss Order is targeting the spirit of Lupus Boreas? As for what purpose, I can't say for certain. Master Jean has already headed off to Wolvendom. I must also begin to make a move myself. Then I will go as well. Master Jean said you should stay at the church and continue your work with the clergy. But you're also a member of the clergy. Right. We'll go give Master Jean a hand. Oh, okay. If the honorary knight will be there, then... But please, everyone, be careful. May the Animal Archon protect you all. Okay, finally. Vampire, please wait me. अभी तक कैथीड्रल से बाहर आया अभी तो. I see. के पास जाने को बोला है पर Has से the पहले Abyss से बात Order करी. already launched a new operation? This could very well have something to do with the defiled statue. We should go as well. But what is the Abyss Order going to Wolvendom for anyway? Are they looking to do the same as they did with Dvalin? Not again! No, that's मैं not पढ़ता likely. नहीं हूँ ना. Unlike Osile, who was just suppressed, Andreas died long ago. Today, it is just his spirit that stands guard over Wolvendom. The Abyss Herald may just be targeting the spirit of Andreas in an attempt to garner some information from one of the Animal Archon's old companions. Dark side. ये तो oh my. Boring. The Abyss Order! Don't underestimate the enemy. Let's take them now. So sorry. Dodge this. That's it. Crumble apart! Yeah. Teamwork is dreamwork. Boring. Useless. क्या? नेट? Cool it. 11 के बाद शायद एक बार डाउनलोड किया था पर दोस्त ने चलाया था वो तो मैंने डिलीट कर दिया. This one will be frozen in time. यार मेरा नहीं है पर उसने मेरे फोन में अपना डाला था. Dodge तो this. उसके बाद मैंने क्या काम हटा के अपना बनाया तो था पर मेरे को यूज़ करना नहीं आया था. मुझे भी कोई नहीं आया. Teamwork is dreamwork. हाँ ब्लैक फोटो तक देखता हूँ. वो क्या बोलते
कहते हैं शिवा मेरे पीछे खड़ा रहता कहता है बताओ ना पकड़ कह रहा कुछ भी भेज दियो कह रहा ब्लैक फोटो भेज दियो तू There sure are a lot of enemies around here. The closer we get to the target, the more enemies there are. ऐसा नहीं मिलता Fits पता the नहीं क्यों Abyss पॉइंट से Order's क्या करें style. Yeah, let's go. I'm not going any further. तब तो कब का कर चुका होता मैं Huh? Why not? Is it because you're afraid of fluffy animals? अभी तक तो मैं अपने कितने दोस्तों को ऐड It करके has सारा nothing गाली to do देने with की हो गया था कि wolves. दी करनी थी दिल्ली दा It's because Boreas was an ancient god, yet he willingly became a servant of the Seven. I cannot possibly agree with his actions. I don't desire any interaction with him. Besides, you're the one people like. I'm less likable. There's nothing special about gods anyway. It's just my opinion, but a word of advice. You shouldn't place too वुल्फ much के पास है trust शायद in वुल्फ पे जा रहे हैं but at this, even if the god in question, मैं कब तक ब्रॉड स्टार की Trust टास्क them करने and मैंने don't. वो भी नहीं किया lest I repeat the failings of my आज तो forebears, नया सीजन आ गया I will tell you. Huh? What? The destruction of the nation of Kanria by the gods is the... well, enough chit-chat. We should get back to business. दो ब्रॉलर I will go take care of the remaining Abyss Order members in the area. तो आ गया ब्रॉलर Try and keep your visit with Boreas brief. Afterward, let's meet at the entrance to Wolvendom. पता है ये कोड की There he मार goes. What a strange Oh. man. Yeah, ये नया that's ब्रॉलर true. You Yeah, also but keep it your is. guard up against unfamiliar gods. At the Rite of Dissension in Liyue, your decision was very similar to what Dane would do. Not the easiest जैसे उसमें situation. टी कोडिंग अपडेट आ गया था आज Honorary Knight, Paimon, what are you two doing here? Oh, Master Jean! So glad we क्या हो found गया you. Rosaria ये told us that 14 you का अपडेट आ came here गया to था fight आज the Abyss Order, so we came to help. Then your help is greatly appreciated. The Abyss Order's sudden offensive is very strange. They have surrounded Wolvendom. I am preparing to send out some knights to fight back. I just scouted out all of Wolvendom, इनका but I अपडेट did not see you. Rosaria told me that the Abyss Order is going after Boreas, but the Abyss Order and Boreas... What is the connection between them? They just like to cause trouble. Do they really need a reason? The Abyss Order already went after Dvalin. It's not too surprising that they would also go after another one of the animal archons, buddy. That is true. Regardless, whether the reason behind the present threat is clear or not, I will handle the situation. Honorary Knight, please go and check if Lupus Boreas is in any... this god's spirit. He does not often see people, but I hear that you have met him before. Maybe it is best that you are also the one to meet him this time. Okay, be careful. Thank you for your help, Honorary Knight of Favonius. Come on, you can do this. Look! Over there! पागल It's बन रहा है क्या Razor! बेवकूफ And ऐसे ऐसे तो बंदे मिलते हैं टीम में You, not welcome here. So, the wolf's wretched spirit likes to raise wild pups now. You claim to be a guardian, yet your once sharp claws have clearly dulled since your days of godly glory. If you serve us, we can restore your divine powers you once held in the past. मैं कौन मर रहा है इतनी रात को साढ़े स्नैप स्नैप भेज रहे हैं वीडियो चालू कर दिया आज Looks like he's in a lot of pain. Oh no! Is this the same thing they did to corrupt Dvalin's mind? Wolves never surrender. मैं कहाँ है This can't go on. मैं बनाई है वो हसड़ की जगह
No matter how many times you resist us, your efforts are all in vain. फिर से फाइट हो गया इससे. Bow before the abyss. Boring. वो फिर से फाइट हो गया इससे. Adventure time. वो तो ये तूने भी रख लिया था. ऐसे 3 बार होती है तो ये दूसरी बार ही है. वुल्फ के पास हो रही है. हाँ. एक और जिस तरह तू पूछ रहा था कि खत्म हुई ना खत्म होने वाली है. Worthless. Here. जिस तरह तू बार पूछ रहा था खत्म हुई नहीं मुझे लगा खत्म होने वाली है. पूछ रहा था. नहीं खत्म नहीं तो दूसरा ज़्यादा लगता है. Adventure time. खत्म होने वाली है तो इससे पूछ रहा हूँ. अरे अंबर सक्री Teamwork is dreamwork. Dodge this. Oh, so sorry. कोल्ड तो बढ़ा दिया हूँ कवर. Dodge this. That's gonna hurt in the morning. Let's light it up. Going in. Dodge this. Off we go. Freeze. Let's light it up. That's gonna. Ugh. Let's light it up. Freeze. Oh, so sorry. अकेले अकेले दिखा दिया मैंने Everybody stand back. दो अल्टीमेटली गेम ही था. The ceremony was interrupted. How fortunate for you. How does an old spirit have such determined will? No matter. This is but a small unforeseen variable. Our grand scheme will not be affected. It दूसरी फाइट disappeared भी करता again. है. Thank you. You came. Just in time. Human Lupical, I am ashamed that you must see me in my present state. But still, the Abyss Herald underestimated my strength. Lupus Boreas never refuses trial. But scary outsider, not respect trial rules. I too didn't see the trap. Wait. So you mean the Abyss Order had everything prepared to corrupt Lupus Boreas' mind, then lured him out under the pretense of challenging him in a trial? Thank you. In the future, my claws must get sharper. You smelled danger and came here? No, we heard about the danger. Paimon's nose doesn't even know what danger smells like. Besides coming to help, we actually have something to ask you about too. Excuse us, Mr. Wolf God. Do you know anything about the first field tiller? I pay no heed to the contraptions of humans. I know not what this field tiller is. Though it entered into my proving ground by accident, and I mistook it for a challenger. वैसे भी 18+ है. क्या है
स्ट्रीम। मैंने 18 प्लस कर रखी है ऑनेस्टली। अरे ये एक्सेस कोई भी कर सकता है, 5 साल का बच्चा भी कर सकता है। 18 प्लस करने का फायदा क्या है कोई? क्योंकि रिस्ट्रिक्ट नहीं करता ना वो, 18 प्लस है पर नॉट रिस्ट्रिक्टेड है। क्योंकि 18 प्लस करेगा तो चलती ही नहीं है वो, बेल आइकन यूज़ नहीं कर सकता, तो आधे सारी चीज़ें यूज़ नहीं कर सकता वो। Before it fell to the ground, it fled the proving ground. By the sounds of it, it's possible that could have been the very first field tiller, right? Missiles. I do not know this strange word. As I said, I pay no heed to the contraptions of humor. It could spin, leap high into the air, and even shoot fireballs. Although no match for a god, it was stronger than even many who wield vision. Fireballs? Hey, didn't we hear this somewhere else recently as well? Anyway, this pretty much proves that the first field tiller came to Mondstadt, doesn't it? It sounds like the first one was way stronger than the mass-produced ruin guards that came after. But in this story, it was damaged at the proving ground while fighting the Wolf of the North. Don't know. But did we help? Yes, you were a big help. Thanks. We need to keep investigating something super important. The Abyss Herald may have left, but the Abyss's forces are still attacking. You two be careful. Yes, I smell more danger. Bigger danger. You too. Also, be careful. Now that was some good intel. Quick, let's go tell Dane. Dane, there you are. Did you see Master G? I saw her, but purposely avoided her. As both the Lion Fang Knight and acting Grand Master, she naturally would have some reservations towards me. If I'm not careful, one day I may find myself becoming the object of one of her investigations. But back to the matter at hand. I defeated some of the Abyss forces, but wasn't able to gather any information. Did you have more success? I see. Well then, we can more or less figure out where the first field tiller ended up. Huh? Really? Just from the Lupus Boreas story? That information combined with a more comprehensive analysis. For example, the old story you told me you heard in the Cathedral. Exactly. The strange story told to you by that young sister, long mistaken to be a curse rained down by a deceased tyrant. Paimon gets it. So the Tyrant's final fury was really just missiles fired from the field tiller after it ran from Wolven. After it was damaged in the fight with the Wolf of the North, it must have wandered into the ruins of Old Mondstadt and stayed there. Then, whenever anyone got close, pew, pew, boom! It would fire a ton of missiles at them. Until one day, it finally broke down for good, and the fireballs stopped raining from the sky. Back then, the people of Mondstadt hadn't seen many ruin guards before, so they came to interpret it as the Tyrant's final fury. It looks like we need to make a trip to Storm Terror's lair and comb the entire area. What do you mean? Huh? You mean... Oh, Paimon remembers too! We saw that abandoned ruin guard sitting atop the tower when we went there before. Can't forget something like that.
this is it, right? Okay then, use your elemental sight to look for the eye. Ooh, so what did you see? Huh? Nothing? Oh, but Paimon was so excited. What's going on? Are you sure you did it right? This requires another method. Using elemental sight on a field tiller is of no use because it is not powered by the elements. Let me give it a try. And done. Wow! It's The very thing the Abyss Herald has been seeking all along. The eye of the first field tiller. All of the ruin guards today are just replicas of this machine. As the prototype, its combat capability was unrestricted. prototype? Oh, Paimon doesn't know that word. Is it another ancient term from Conria? As the Abyss Order has surmised, if this eye is placed in the hands of the defiled statue, and if the limbs of Osiel, Overlord of the Vortex, are attached to the statue, there you have a mechanized god. And this newly born god will have the power to topple the divine thrones of Celestia. Yes. Then, what should we do with this eye? No. I'll guard it myself. क्या Dane? अभी वहाँ पे हूँ जो ये स्टॉर्म टेरर पे फर्स्ट रूइन कार्ड था उसका वो निकाला है उसकी वो क्या था You may doubt me if you wish, but I must ensure it does not जल्दी fall तो into कर the रहा हूँ wrong इससे जल्दी क्या hands. करूँ No matter where we may hide it, they will find it. And as for the Church of Favonius, you know I don't trust them. Oh, right. But our work isn't done yet. To avoid बाकी any नहीं तो further बाकी ही कल कर लूँगा repercussions, ना we जरूरी must आज ही also कंप्लीट take करनी है care of that defiled statue. We can't have the church get involved. Let's handle तभी it तो मैं मतलब स्टार्टिंग में ourselves. खर्च कर लेते फिर मैं करता रहता As for इसलिए what I सोच mean रहा था by take care of it, naturally I mean to completely destroy it. Destroy it? That's a statue of the seven! As well as being a really important cultural relic, well, good thing we didn't tell Barbara earlier. Otherwise she'd be going completely bonkers right now. Do the Seven really expect me to help them look after what belongs to them? Let's go back to those ruins and destroy the inverted statue. If we are lucky, we will also run into that Abyss Herald. I'll make sure it doesn't get away this time. एक बहुत पुरानी सिविलाइजेशन थी, यहाँ पे बहुत मॉडर्न ह्यूमन रहते थे, उसमें टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस थे और काफ़ी पावरफुल थे, पावरफुल इन द सेंस की टेक्नोलॉजी और फिजिकल वाइज। और एक दिन यहाँ पे गॉड्स आए बहुत सारे मिलके, उन्होंने इनको हरा भरा के यहाँ पे अपना खुदा जमा लिया। बस ये है इनकी स्टोरी, पूरी समझ आ गई यहाँ समझ रहा है? हाँ तो तो पूरी स्टोरी मेरे समझ आ गई पूरी। मैंने कब बोला नहीं यार एक वर्ल्ड के सारे गॉड्स ने मिलके यहाँ पे उस सिविलाइजेशन को हरा दिया जिसमें कोई गॉड ही नहीं था। सारे मौसम लगते बाद में साले खुद भी मर कट के पता नहीं क्या देगा को वाली स्टोरी। मुझे तो लगा था यही होगा, पता नहीं मुझे नहीं क्या है, तो मैं ज़्यादा इंटरेस्ट। ये जो डोमेन सी थी जहाँ पे स्टार्टिंग में गए थे उसमें दोबारा गया तो यहाँ से कितनी बची है? एंड होने वाली है, बस जल्दी जल्दी जाइए। तो यहाँ पे So तो भाग after के all जाना that है। running around, we end up right back here again. Look at us. We barely escaped this place last time, and now we're strolling right back in. Gee, surely we must be some of the bravest adventurers in all of Teyvat. That are the stupidest. To
get to that creepy statue, we just need to follow the path we used to escape last time. That should take us right to it. Yep, that'll work. Let's go. And remember to be on your guard. हालांकि बाहर जाके मैं 80-90% ऑफ द टाइम मास्क पहन के रखता हूँ। जब भी बाहर होती ना तभी टाइम तो बाहर में मास्क पहन रहा था। हम कहीं जाने की सोच रहे थे। मुझे आएगा कि मैं बता तेरे वहीं आऊँगा मैं छोड़ जाऊँगा। अब तो नहीं पहले आया तो आ गया था अब तो नहीं। आज ही पापा ने सब मना कर दिया। An eerie, lifeless, dark chamber. I कह रहे थे कि understand the evil aura जैसे you मैं were शिव मंदिर के describing जाता रहता earlier. था ना और वो आता रहता तो आज पापा कह रहे दोबारा से बहुत बढ़ रहा कि अब अंदर ही रहेगा बाहर Be मत जाओ। careful to not be overwhelmed by the power of the defiled statue. The abyss कोई नहीं Herald. अब कह रहे आना It's जाना here. दोनों बंद। You are just as vexatious as ever, Dane's हाँ? enemy. I sense your soul is stained कहाँ? by terrible bloodshed. अच्छा Perhaps from your darkest nightmares. And something then we are the same. It is your words that forever reek of corrupt time to silence. तीसरी पारी। Off we go. फाइट ही तो कर रहा हूँ इसमें क्या जल्दी करूँ अपनी पावर के हिसाब से पूरी फाइट हो गई। Teamwork is dreamwork. Boring. स्टोरी है मेरे को आराम से खेलनी थी। मेरे को ये थोड़ी था कि मुझे फटाफट बस कंप्लीट करनी थी। मुझे आराम से खेलनी थी और आराम से खेलता हूँ। Light it up. जैसे Push your luck. Adventure time. Benny's adventure team. I have failed you. अगर मैं बोलूँ मैं इस फाइट में हार गया तो Freeze. मैं हमेशा सबको हरा देता हूँ। स्पायर एबिस मेज जो भी होते हैं इनसे हार जाता हूँ। यहाँ पे दो देख रहा था मैं। तो मार देगा तो मेरे को एक फायर का एक बर्फ का बर्फ का ना फायर का बर्फ नहीं है वाटर है। वाटर हाँ वाटर को मार अभी मेरे को शाह हुआ है इस बार पे जीतना। शाह से मैं दोनों मार सकता हूँ तो बता। क्या नाम आगे तो सुन बाकी सब मरे होंगे। Evil conquering. आ गया सर 4 मिनट। वाटर का कैरेक्टर ले जावा दे अब तो मैं यहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ। वाटर तो है ही नहीं। कहाँ से कंटिन्यू यहीं से जहाँ से फाइट स्टार्ट हुई है। और यहाँ पे मैं थोड़ी कैरेक्टर चेंज कर सकता हूँ। Off we go. अबे यार कितना टाइम लगेगा चार्ज होने में? मरने के बाद चार्ज होगी क्या? 5 शॉट मार दिए चार्ज नहीं होगी तो।
जब ये पहली बार दिखता है Let's light it up. Everybody stand back. Let's light it up. एक चीज और करता है जब तुझे जस्ट मारने वाला होगा ना तो मरने के पहले वाटर की स्पीड स्पेंड करता है। हाँ वो तो अभी नहीं बनाई थी इसमें जब वो वुल्फ वाली थी भाई उससे पहले करियो जब ये वाटर स्पीड बना रहा है ना वो तो इसको डैमेज देके एकदम लो कर दियो ताकि एकदम लो करे फर्क नहीं पड़ता नहीं चल सकते तो पहले तो साइड में बोला Let's light it up. Adventure time. Everybody stand back. Benny's adventure team. I have failed you. Fine. नायर में आना है बैनेट मर गया और उन्होंने अपनी दोनों शील्ड दोबारा बना ली हाँ थोड़ी जब दोबारा बना ली अल्टीमेट आने में इतना टाइम लग रहा है इतना ज़्यादा कि हो ही नहीं पा रही ये इतनी जल्दी इतना टाइम को लग रहा है अरे एक एलिस मर चुकी है एक एलिस को मार तो दिया शाम मर गई Benny's adventure team. नहीं यार बैनेट को हील करने में जैसे ही डालो मर गया दोबारा अभी इसमें टूट गई थी एक मर गया दूसरी चीज टूट गई दोनों वो तो मर गए अभी इसमें मर गए दोनों हाँ इसको किसे मारूं काया से काया ही बचा है उसकी 200 डैमेज है मर तो जाएगा और बहुत टाइम लगेगा अभी बेनिट को देख रही है ना बेनिट को डिवाइड कर दी 60 सेकंड है 60 सेकंड में मुझे इतना जरूर पता है कि मेरा काया मर ही जाएगा मैं हार जाऊंगा इतनी तो गारंटी है Dodge this. पता है कि काया मर जाएगा तुम्हें मुझे लगा था मैं बच जाऊंगा हारने वाला हूँ Off we go. मैंने को बहुत टाइम लगा चार्ज होने में इतनी देर में तो हालत खराब हो गई Adventure time. बैनेट को अल्टीमेट चार्ज होने उसके शॉट डॉज नहीं हो रहे वो जो बेवकूफ सा एडिशन है उसके टॉस तो हो रहा है पर चार्ज इतनी देर में हो रहा है बहुत टाइम लगेगा I'm going in. चल बैनेट की अल्टीमेट आ गई पर मेरे बाकी दिया लग रहा है ऐसे करता होगा ना बेनेट की स्किन करके चेंज कर जल्दी दी दूसरे कैरेक्टर से स्विच कर लेता है ऐसे करता हाँ है Adventure time. तो पागल है तब तो तेरे बेनेट Let's light it up. बेनेट के स्किन करके बेनेट को ही रहने देगा तो जल्दी जाएगा मर जाएगा ना फिर वो अब तू पागल है
तब भी यहाँ लोग बैनेट ही बचा है, तब भी बहुत टाइम लग रहा है हमें। Off we go. तो वो तो फिर रिवाइव कर लिया ना, तो बाकी मर गए। बैनेट तो बचा होगा, Adventure time. ये तो लाया ही नहीं। I'm going in. मेन कैरेक्टर लाया था ना मैं, मेन कैरेक्टर का उससे ज़्यादा डैमेज था। Adventure time. जब तक रिवाइव टाइम में आएगा तो फिर मर ही जाएगा। अच्छा नहीं है तो वाटर शील्ड नहीं है। Off we go. कैसे मर जाएगा? I'm going in. अबे बैनेट की बात नहीं कर रहा था, इसकी बात कर रहा हूँ। उसकी रख गई वाटर की थोड़ी ना, ये घूमना बंद करेगा। Let's light it up. जल्दी घूमना। Everybody stand back. Let's light it up. Let's light it up. Off we go. क्या कर रहे हो? I'm going in. घूमे जा रहे लगातार, मार रहे हैं कैसे? शील्ड तोड़ने के लिए पहले काया को करूँ क्या? भाई हाँ ऐसे काया जादू सही है वैसे। मैं भी कुछ आ रहा हूँ, Everybody चाव कर stand लेता back. हूँ, उसको मार पाऊँगा तुमसे। ये तो हेल्थ ही नहीं हो गया, हाँ? हेल्थ ही नहीं होगी, शील्ड टूट गई है मैच नहीं ये तो है थोड़ी। Why do they never miss? Let's light it up. और बैनेट की इतनी कमी को मार नहीं पाई थी, चावल ठीक है। Everybody stand back. That's gonna hurt in the morning. Off we go. वह कितना दिन है ना, 4 बार जीत गया, देख लीजिए। वन शॉट ये टूट गई। अच्छा उसके बाद एनिमेशन से मारा, मुझे लगा उसके बाद जो हेल्थ बची वो मारनी पड़ेगी। हाँ देख लिया कौन आया। मैं तो सोच रहा था कि आया नहीं है, पूरी स्टोरी खत्म होने वाली है। Could that be? यही पावर देख रहा है Wait! He just blocked an attack against the Abyss Herald. Your brother and the Abyss? Lumine, उसके पास उसकी why are you ओरिजिनल with स्वॉर्ड है, Dane? जो स्टार्टिंग में पे स्वॉर्ड थी, हमारे ट्रैवलर के पास नहीं है। स्वॉर्ड खो गई नहीं, इनकी स्वॉर्ड भी बहुत स्पेशल है, मतलब पावरफुल है। देख ही रहा था। Your brother knows Dane? Ether, we meet again. What's You going know, on we here? like you Dane asking knows him about Dane. too?
पता नहीं क्या सीन है, जो दूसरा मैंने देखा, जिस भी बंदे की वीडियो देखी 90% ऑफ द बंदे 80-90% वही सेलेक्ट कर रहे हैं जो मैंने भी किया हुआ है, क्योंकि दूसरा वाला है ही नहीं इतना एक्साइटिंग सा, मतलब पता नहीं क्या। You shouldn't team up with this man. He is my enemy. फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों के एक ही हैं, जो कि हाँ, तो इसका पता चल रहा है कि उसे जानता है, मुझे पिछली स्टोरी में पता चल गया। But it must be said. Don't try to stop me. Don't try to stop the Abyss. That man Dainsliff was the Twilight Sword, one of the royal guards of the final dynasty of Conria. 500 years ago, he failed to prevent the destruction of Conria. A curse of immortality was laid upon him, to forever wander the wilderness, while he watched the people he was supposed to protect turn into the monsters of the Abyss. You're saying Dane is from Conria? The same Conria that was destroyed 500 years ago? And you said the people turned into monsters? You're trying to tell Paimon that the Abyss Order is not only related to Conria, but is actually the people of Conria themselves? And the whole thing about Dane being your enemy... Paimon's so confused. Home. Yes, of course. Home is wherever we are together. But I cannot go with you to the next world to find a new home. At least, not yet. Until the Abyss has engulfed the thrones, my war with destiny will see no end. Listen to me, Lumine. I have already traveled through this world once. Once you reach the end of your journey as I did, you will see for yourself the true nature of this world. Home is wherever we are together. So we'll meet again. Though we need not rush, sister. I have more than enough time to wait for you. We have always had enough time. कठिन चल रहा है, तीनों चलने का हम नहीं जा पाए। Oh, don't be too sad. We'll find them again. Look on the bright side. At least we got some really मुझे useful बोला ना, we information. have always had enough time. इसलिए ये पता चलता है कि इन दोनों की भी लाइफ यहाँ के लोगों के मुकाबले बहुत ज़्यादा है, मतलब ये भी एक At तरह से least now, इमॉर्टल as गॉड well as है। the Seven, Dane is also a key part of finding your sibling too, right? तभी तो ये साला 500 साल देख, इसने बोला नहीं था 500 साल पहले बेहोश हुए थे, और नहीं 20 साल तक तो ये साला बेहोश पड़ा था समुद्र के किनारे। That's right. और देर इसके उसमें कुछ असर पड़ा, वैसे का वैसे ही By लगा the था। way, what they said just now is all pretty ये लोग भी confusing. एक तरह से इमॉर्टल गॉड Did टाइप, you understand it at all? और शायद अभी बच्चे हैं तो इतनी पावर जानते नहीं, नहीं तो इनकी पावर गारंटी है कि इनकी पावर यहाँ सबसे ज़्यादा है, उस गॉड से भी ज़्यादा जिन्होंने इन्हें हराया था। First off, तभी उसने that मौका मिलते Abyss हरा दिया, hero जानते called हैं your ना कि brother वो ज़्यादा Prince. दिक्कत कर देंगे आगे चलकर। It seems like your brother is leading the Abyss Order. Even the Abyss Herald answers to him. तभी तो इनको Still, दोनों को इतनी we स्पेशल don't वो know दी for गई sure है if he's the highest. They Also, want them. your brother said that he wants to God will engulf respect the thrones and go to war with destiny. What the heck does that mean? Could it be he wants to destroy the Seven and the Seven Nations? Next thing, turns out the Abyss Order monsters are really what the people of Conria turned into after their nation जो was बड़ी वाली चेस्ट में destroyed. जो लीव And करने हाँ वो बचाए नहीं उसे। हाँ वो तो मैं पूरा समझ चुका। Yeah, you're right. Then और वहाँ we के can't let लोग our ये तो journey's मैंने not बहुत over पहले yet. बताया था कि यहाँ Let's के get जो a move नॉर्मल on. लोग थे वही Time यहाँ to के leave वही this terrible dark उसमें place. बदल गया And मास्टर्स। yep, if your brother wants you to reach the end of your अब बस journey, वो मेन तो ये कह रहा है ना कि अपनी जर्नी ख़त्म करोगे तो पता चल जाएगा, ये एक बार ख़त्म कर चुका है। इसकी स्टोरी में अगर कोई ज़्यादा ट्विस्ट नहीं हुए ना तो इसकी स्टोरी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एनीमे की स्टोरी जैसे होती है ना, बहुत दिमाग खराब कर come देती on, traveler, let's go. है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। स्ट्रेट फॉरवर्ड भी पर अच्छी है।
अभी तो ये तो है ही। तो मैंने ये थोड़ी ना बेकार है स्ट्रेट फॉरवर्ड में मैंने ये थोड़ी बेकार है, अच्छी है। नहीं कहने का मतलब आगे जिस तरह से स्ट्रेट फॉरवर्ड में किस तरह से दिखाते हैं उसके ऊपर है, और आगे कि आगे की बोरिंग करेंगे या फिर आगे बोरिंग तो अच्छा ही नहीं रखते करेंगे, रहेंगे। इनकी स्टोरी जिस हिसाब से चल रही है अगर ये ऐसी भी रखेंगे तो भी अच्छी चलेगी, We go. और अच्छी चल रही है मेरे हिसाब से। ठीक है चेस्ट ले चुका है देव, मैंने चेस्ट ले चुका, स्टोरी ख़त्म, लीव कर दिया, हो गया। तो पीट देगा। आदमी बोलना क्या करना है। हाँ जल्दी खाने की अच्छा मैं हूँ, हाँ हाँ अचीवमेंट सेलेक्ट कर रहा था जरा। ज़्यादा टाइम नहीं है, 100-200 मिल रहा है, 5-5 मिलते हैं, पता है 100 कम से कम 100 करके पैसे। ये बात तूने काया की ली? क्या पाया है, मैंने भूल गया अभी कहाँ पहुँचे हैं। जल्दी से मैं स्टार्ट करूँ फिर। मुझे चल के आना पड़ेगा, ऐसे साइड में था इसलिए। अबे यार क्यों आ रहा है मेरे में? अपना वो एक कैरेक्टर निकाल के देखी, पता नहीं कौन आ रहा है। मैंने रेजर निकाल के रखा है इसमें। An assassin from our homeland, or a fool who trespasses upon the waters of Chinsa. रेजर आएगा ना यार, Teamwork is dreamwork. चलो Let's light it up. Let's light it up. Everybody stand back. Oz revealed. Let's light it up. Let the torrent surge forth! तेरे
बाग वो वही गिरा मैं। Let the torrent surge forth! Off we go! Contamination must be washed away! वो कहाँ गया वो? पता नहीं बीच में टायर वगैरह बीच में आता है तेरे से देखो ना क्या चल स्टार्ट कर नहीं मेरे को जब बता स्टार्ट कर चल नहीं दिखता ठीक है। An assassin from our homeland, or a fool who trespasses upon the waters of Chamber. Light it up! Adventure time! In the image of the wilderness. Off we go! Let's light it up! क्या हो रहा है I'm going in! That's gonna hurt in the morning. Crumble apart! Let's light it up! इसके ऊपर एक्टिंग है। Everybody stand! Let's light it up! टेलीपोर्ट हो रही है Let's light it up! मार नहीं पा रहा इसमें Let the torrent surge forth! Starfall! Adventure time! ऊपर चलना होगा Surge of vengeance! Contamination must be washed away! Starfall! यार क्या कितना भाग रहा है थोड़ी ना Torrent surge forth! तो रुक जा यार River carving rapids! तेरे को Let the torrent surge forth! Adventure time! Teamwork is trick! By royal decree! Let's light it up! साला मैं ही ले रहा हूँ सारा टाइम। मैं तो दे नहीं सकता ना मेरे पास करैक्टर ही नहीं अच्छा
सुनी होगी मैंने। क्या ठीक हो गया था कौन सर्दी से वो दवा की टेंशन में इस वजह मैंने ठीक दवा थी अभी भी ऐसे बात है मैं तुझे बोलूँगा जब तक नहीं आया यहाँ ले खत्म कर An assassin from our homeland, or a fool who trespasses upon the waters of Chingsa. Let's light it up! In the image of the wilderness. That's gonna hurt in the morning! Yeah. I can fix this. Blaze over. ये रहेगी तो ऐसे मर जाएगी हेलो हेलो आवाज क्यों नहीं आ रही है हेलो हाँ आ गई आवाज मेरी चार्जिंग खत्म हो गई ना और दूसरा वाला काम कर नहीं रहा तो कुछ बोलने लगी मुझे आवाज नहीं आ रही पता रिजाइन 3 बार हुआ खत्म हो रिजाइन नहीं अभी नहीं किया मैं सोचा कल ही करूँगा सीधा नहीं मैंने नहीं किया कल करूँगा मैं आज नहीं कर रहा उसको जिस दिन से मामा ने ईयरफोन किया है ना जो मैंने पहली बार ये दोनों एक साथ लगाए थे सुन तो मैं यार तुम्हें मामा ने दिए थे ना तो पहली बार जब मैंने दोनों साथ में लगाए थे ना तब मुझे हल्का डाउट हुआ उसी समय डाउट हुआ था कि एक एक काफ़ी अच्छा लग रहा है एक थोड़ा ऐसे ही लग रहा है और उसके बाद से धीरे धीरे दूसरा ख़राब ही हो गया स्टार्टिंग से प्रॉब्लम पता नहीं क्या दिक्कत थी और वो तभी समझ आया जब डब्बे पे वारंटी वाले पार्ट को कलर कर काट रखा है जो इसके जो वारंटी वाला पार्ट है तो डब्बे के ऊपर लिखा होता है ना कितने साल की वारंटी है तो वो चीज़ को मार्कर से काट रखा था देख वो चीज़ मैंने उसी से मैं देखी थी मैं समझ गया था
एक महीने खेलेगा मतलब महीने में एक बार खेलेगा या एक महीने खेलेगा, क्या बोल रहा है? कि साल में एक महीना खेलेगा वो? हाँ? एक महीने में एक बार एक महीने में एक महीना खेलेगा? शायद ये कह रहा है एक महीने में एक महीने बाद खेलना। क्या? हाँ तो मेरे 34 है, मेरे 35 हो गया। बात तो ठीक है, तो एक महीने का बदला नहीं है। 30 तारीख तक हुआ है ना ये? वैसे यार तो क्या बताओ, अभी भी दूसरी हमारी भी कुछ एक महीने का हुआ कुछ, जैसे हमारे एक महीने का होगा। क्या? हाँ तो मैं वेट कर रहा हूँ, अपने में क्या हुआ ना। हाँ तेरा 54 होने में कितना रह गया? एक्सेप्ट करना, करना एक्सेप्ट। अरे हाँ, वो तो एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा। अभी किया तुमने? मुझे नहीं पता। उसी को पता, नेट में देख लेना।
जो तू कह रहा था ना स्टोरी वाला, तो कह रहा था कि चेक कहाँ से कर सकते हैं, बता। मैं तो कर दूँ एक से। अबे ये कहाँ से आ गया, ये चूज नहीं है। चलो तेरा बर्थडे कब था या कब है? 22 फेब। पता, 22 फेब। तो उस दिन तुझे कुछ, उस दिन क्या मिला, केक मिला था क्या तेरे को गेम में? क्या करता था वो? बंदे कह रहे थे उस बर्थडे वाले दिन विश करने पे अच्छा अच्छा लक होता है। क्या? पर एक बात, एक चीज़ है जो मेरे को हाँ कहनी थी। जब मैं ये वाले लगा दूँ ना, वायरलेस वाले जब लगाता हूँ, जब ये वायर वाले लगाता हूँ, दोनों में बहुत डिफरेंस आ जाता है। जब मैं वायरलेस वाला लगाता हूँ तो मेरे को कॉन्स्टेंटली कुछ साउंड आती है, ऐसे मतलब बैकग्राउंड में हल्की हल्की नॉइस सी आती है। तुमने देखा होगा कि जब भी मैं अपने ये वायर्ड वाले लगाता हूँ, उसके बाद हमेशा करो जाता हूँ मैं कि तू बोल नहीं रहा है, आवाज़ चली गई। वो इसलिए कि वायर्ड वाले लगाने के बाद इतना ज़्यादा शांत हो जाता है, बिल्कुल ऐसा एकदम सन्नाटा छा जाता है, ऐसा लगता है। तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कई बार। पर जब वायरलेस वाले होते हैं तो बैकग्राउंड में हल्का हल्का नॉइज़ आता रहता है जब जब तू होता है। तो इससे क्या समझ आता है? क्या बता, मुझे तो समझा। मैं तो ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि इसका मतलब क्या, बेकार है या अच्छे हैं, ये पूछ रहा था मैं। है ना, मैं ये बता रहा था बेकार है। ये दे दिया वही बहुत है। नहीं, मैं कभी खुद तो नहीं खरीदने वाला, मैंने दे दिया, अच्छी बात है। तो सैंड्स मिला है, अटैक परसेंटेज, नीचे है एचपी, एलिमेंटल मास्टरी, अटैक, क्रिट रेट।
तो ये तो मेरा भी है, सैंड है, अटैक परसेंटेज और नीचे क्रिट रेट है बस। नीचे से क्रिट रेट होता है, अटैक है, परसेंटेज में नहीं है, नॉर्मल में है। चल फिर भी देख लेंगे। हाँ, HP, अटैक, क्रिट रेट और एलिमेंटल मास्टरी। जरूरी थोड़ी है। इसके अलावा एक लावा वगैरह भी मिला। फिर कंडेंस यूज किया, एक नॉर्मल भी तो करता है। मैं क्या, मेरे 40 थोड़ी और है। तो बाहर नहीं लिया, मैं वेट कर रहा था अंदर ही। हैं? देख रहा हूँ बाहर का आने दो। 36 हो गए होंगे। मेरे हैं, हाँ 36 है। 40 कितनी देर में होंगे? टाइम बहुत लगेगा, अगर 10 मिनट में हो जाते तो अच्छी बात थी, पर 10 मिनट होंगे नहीं, बहुत टाइम लग जाएगा। पता नहीं, सोच रहा हूँ क्या करूँ, तू ही बता दे। अरे मैं क्या करूँगा, एक काम करूँगा, या तो मैं वो यूज़ कर लेके 2 बार मार लेता हूँ, रिफिल करके 2 बार मार लेता हूँ। डोमेन तो नहीं करना अभी, मैं वो कर लेता हूँ, कोई ले लाइन। अरे यार कल संडे था, निकल भी गया, आज मंडे भी निकल गया। वेट तो किया ही नहीं मैंने करेक्टर, करेक्टर बिल्ड तो करे ही नहीं। तू क्या है ना संडे वगैरह को, जो भी 1-2 मिले हुए हैं उनको अपग्रेड करके टेस्ट करके थोड़ा करेक्टर्स हो जाएंगे। मतलब आर्टिफैक्ट की बात कर रहा हूँ, आर्टिफैक्ट अपग्रेड करने का मतलब था। क्या? जैसे हमारे होता है तेरे होता है। मेरे तब होता है अगर मैं शाम को नहीं सोता, सोता हूँ तो नहीं होता।
चलो हो गया, मैं तो चल रहा हूँ। अभी डिस्कस करना है कि कल क्या खेलना है, कल रात को। कल पहले तैयारी कर लूँगा, फिर शाम को मैं फ़ोन कर नहीं पाता, कभी सो जाता हूँ कभी कुछ, फिर रात को ही तैयारी करनी पड़ता है। जैसे बढ़िया अभी से ही पूछ लूँ, कल कॉल नहीं करना पड़ेगा, पहले तैयारी कर लूँगा। तू बता कल स्काई खेलना है कि ब्रॉल स्टार्स खेलना है, दोनों में से एक चीज़ बता दे। हैं? आज खेल तो लिया क्या? मैं सोच रहा हूँ एक दिन गंशिन इम्पैक्ट खेलूँगा, फिर एक दिन ब्रॉल्स या ब्रॉल स्टार्स या स्काई में से एक चीज़ खेल लूँगा, फिर अगले दिन फिर गंशिन इम्पैक्ट खेल लूँगा, फिर इन दोनों में से एक चीज़ खेल लूँगा। हाँ ठीक है। वैसे तो मुश्किल से 5 मिनट का काम होता है, वो तो हो जाएगा। करने को मैं स्ट्रीम से पहले भी कर सकता हूँ, 5 मिनट में स्टार्ट होने से पहले। चल मैं डिस्कॉर्ड से जा रहा हूँ, तू बता दे फिर पहले कल क्या खेलना है दोनों में से। हैं? बोल। चलो मैं ही बोलता हूँ स्काई खेलेंगे कल, चल फिर ठीक है, बाय। तो चलो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे मिलूँगा कल एक और लाइव स्ट्रीम में, तब तक के लिए बाय बाय।